Good morning, all of you. So, today we are going to continue with this chapter, that is the last unit of this, and we have completed till this edit text. Now, in the further part of this, we are going to see about this button, a button that is consisting of a text or an icon, we can say, that communicates what action occurs when the user touches it. So that is a button. This is a particular example that is given, and this is an icon that is given, or the icon and both text are given. So this is all that is depending on whether you want a button with a text, an icon, or both. So you can create the button in your layout in a three ways, right? Either you can write in only text, either you can draw an icon, or either you can use both. So that is depending on the particular user, what type of button the user wants in the layout. So this is the text with the text using the button class here. So for that we have to write this part, right? This part is given in this, the Android, the button that is given, that is the starting tag, that is the Android layout width, that is given a wrap content, ht is equal to wrap content Android text, that is given here. Now if I am using an icon, then you have to use the image button, in which the particular source part is to be given, what type of icon I want. And if with the text and icon both are there, then the button is given here, and the particular source part is also given for this. So both can be given for this, right? That is with the Android drawable left attribute, Android drawable left attribute. Here it is given, right? Drawable left, this is the last attribute, that is for the both text and icon. नाउ रेडियो बटन, सबको पता है जनरली ऑप्शंस यूज़ करने के लिए हम लोग रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं. दैट इज़ अलाउइंग द यूज़र टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट. So you can use the radio buttons for optional sets that are mutually exclusive if you think that the user needs to see all available options side by side. So this is the particular part that is given. The radio buttons are here, the yes, no, and maybe the three different options are here. Attending GDG Rajkot, that is some event that is in the Rajkot. If the particular person is attending, then he will select yes. If he is not, then he will select no. If he is confused, then he will select maybe. So that is the particular radio button, in which the different options you can give like this. So for the radio button to create, so we have to use the create a radio button in your layout. So this is a radio group that is given, in which the radio button is here, it is given, right? And after that these are the most mutually exclusive, so you must group them together inside a radio group, right? So by grouping them together, the system ensures that the only one radio button can be selected at a time. तो ग्रुप वाइज मतलब इस तरीके से हम लोग मतलब बहुत सारे डाल सकते हैं, ताकि फाइनली मतलब उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो रेडियो बटन एंड रेडियो ग्रुप, तो टू डिफरेंट की क्लासेस आर देयर, एंड हियर द कोडिंग इज गिवन हियर फॉर दिस. द रेडियो ग्रुप इज फर्स्ट गिवन in the XML part, right? That is the user. Here the Android orientation, Android layout, height and weight, all things are given. Then after that the radio button is given here, right? This is the sub content of this radio group, in which the different radio buttons we have to select. So this is the first radio button, this is the second radio button, and after that when it is complete, then we have to write the closing tag for this. There is a slash radio group. Then after this particular part is complete. So this is all about the radio button. Now check boxes, in which more than one options if you want to select from more than two options, then we have to use the check boxes, in which to select one or more options from a set. So more than one options you can be able to select using the check boxes, that allows the user to select the multiple items. So here your expertise, so here the more than one option you can be able to select. Now after this is a particular checkbox options that is allowing the user to select the multiple items. Here the first of all, a linear layout is given here, in which the more than one options we are able to use. So checkbox here are written for the particular different options, right?
So here when on checkbox click that is written here, that is what, that is the particular action that we have to select on this on checkbox click, right? And string underscore means that is the particular text part, that is the height and width, that is also set, the id part is also given for this, then finally the closing tag for this linear layout is given. So this is all about the checkboxes we are saying. Now the image button is here, so that is a display a button with an image that can be pressed or clicked by the user. तो उस पर्टिकुलर पार्ट को क्लिक करने के बाद भी कुछ पर्टिकुलर लिंक पे वो जाएगा या फिर रीडायरेक्ट होगा. सो दैट इज इमेज ऑन द सोर्स surface of the button is defined either by the src attribute in the image button xml element or by the image view set image source int method. So this is a particular, so here we are able to see this is a particular example of this image button. In this image button here we have to give the source from which the particular button part can have some image, and the layout width and height is part, that part is also to be given. नाउ द रेटिंग बार दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कर रहा था कि जब भी मतलब हम लोग कोई ऐप खोल ओपन करते हैं तो उसके अंदर रेटिंग का एक पार्ट आता है जिसके अंदर हमको रेट करना होता है. तो फॉर दैट रेटिंग बार दैट वी हैव टू यूज़ दिस इन विच वी हैव टू गिव सम पॉइंट फ्रॉम 5, राइट? आइदर यू कैन गिव 1 2 3 3.5 और समथिंग, जो भी आपको देना है, तो दैट यू कैन गिव थ्रू दिस rating bar. So that is an extension of the seek bar and progress bar that shows a rating in stars. So here the user can touch or drag or use the arrow keys to set the rating while using the default size rating bar. So this is a particular example of this. Have you rated this app? So this is a rating bar that is given in which the Android ID, rate and layout is to be set. So this is how to code for the rating bar. Now option menus are given here. ऑप्शन मेन्यूज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग. यहाँ पे एक मूवी दिया हुआ है, टीवी शोज दिया हुआ है. तो ये सब ऑप्शन मेन्यूज दैट इज़ अ प्राइमरी कलेक्शन ऑफ मेन्यू आइटम्स ऑफ दिस in which we can be able to place some options, actions that have a global impact on the app, such as सर्च करने का, कंपोज मेल सेटिंग्स, ये सब हम लोग देखते हैं ईमेल आईडी के अंदर यूज़ किया होता है. सो अलग अलग ऐप्स के हिसाब से अलग अलग मेन्यू आइटम्स होते हैं. सो हियर द मेन्यू पार्ट इज़ गिवन फॉर दिस. And secondly after this, so for this menu is given in which the different items has to be set, and the menu again it's to given different items again are to be set. तो different menu होते हैं अलग अलग, तो उसके अंदर अलग अलग items हम लोग को set करना है, फाइनली item close करना है, राइट? आफ्टर दैट द मेन्यू इज मेन्यू पार्ट इज अगेन क्लोज. तो मेन्यू के अंदर कुछ और मेन्यू होगा तो इस टाइप से नेस्टेड पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं. So to specify the option menus for an activity, so we have to override on create options menu, right? So you can inflate your menu resource into the menu, so provided in the callback, so users can select an item from the options menu. The system calls your activity on options item selected method. Then the method passes, मतलब ये मेथड है अलग अलग जो भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो ऑप्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ऑन क्रिएट ऑप्शंस यूज़ करते हैं. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कुछ भी क्लिक करता है तो वो ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, मतलब क्लिक करने के बाद कौन सा पेज या क्या ओपन होगा, तो वो चीज़ वो यहाँ पे एक्शन हम लोग को प्रोवाइड करना होगा. सो दिस मेथड पासिस द मेन्यू आइटम सिलेक्टेड. यू कैन आइडेंटिफाई द आइटम बाय calling get item id which returns the unique id for the menu item. Now override यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, right? Here the override part is given. At override the public boolean on create options menu. The menu here it is given. The menu inflator part is given in which the inflator is given as an object. So here the method we are using, that is a get menu inflator the dot inflate. Here the inflator object is used in which we have to use this method inflate, in which these two parameters are used, that is r dot menu and comma menu, and after that return true. So this is for the override. And here if we want to switch, so from one to another, so they get then item dot get item id, and after that the new game, then return true. then after case rid dot help चूज़ करते हैं तो शो हेल्प करेगा. अगर कुछ न्यू मतलब पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करेगा तो ये न्यू गेम वाला पार्ट को मेथड को सिलेक्ट करेगा. और डिफ़ॉल्ट में सुपर डॉट ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड आइटम आएगा, राइट? तो ये पर्टिकुलर केसेस आर गिवन हियर. सो स्विच केस इज गिवन फॉर दिस. कौन सा पार्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसके बेस पे क्या आएगा. सो दैट इज़ फॉर द स्विच केस. कॉन्टेक्चुअल मेथड
action method here it is given, that is a context menu is a particular floating menu that appears when the user performs a long click on an element. तो पर्टिकुलर हम लोग देखते हैं कभी कुछ लॉन्ग क्लिक करते हैं किसी एक एलिमेंट पे तो उसमें ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को मेन्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टेक्चुअल एक्शन मोड बोलते हैं उसको। तो वो प्रोवाइड करता है कुछ एक्शन, कुछ जैसे इमेज पे क्लिक किया तो उसमें कॉपी इमेज या सेव या फिर कुछ, यहाँ पे किसी टेक्स्ट पे भी हम लोग लॉन्ग क्लिक करते हैं तब भी ऑप्शंस आते हैं, आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, कट करना है, जो भी करना है। सो दैट आर द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड दैट अफेक्ट द सिलेक्टेड कंटेंट और context frame we can say. So here it is example that is given, here the particular image here it is given in this, so that is long clicked, after that this menu is given, so we have to download the image or open the image in the new tab or the search the Google for this image or share image। तो ये सब ऑप्शंस दिए जाते हैं जो हम लोग फाइनली हम लोग उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस आर गिवन इन द कॉन्टेक्चुअल एंड एक्शन मोड। So how this part is, that is the context menu that is implement the on create context menu method in your activity or fragment, here we are saying. So here we have to use the super dot on create context menu, in which menu comma v comma menu info is given here. So menu inflator is also given. So same methods here we are using as we are used in the previous menu part, and here also the menu part is given, द स्विचिंग आइटम, तो पर्टिकुलर कोई एक पार्ट को आप सिलेक्ट करोगे तो इसलिए स्विच आइटम भी दिया हुआ है, डिलीट करना होगा तो डिलीट करेगा, एडिट करना होगा तो एडिट करेगा, और डिफ़ॉल्ट में जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लास्ट यूनिट, एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी through the WhatsApp also or through any so in the comment section in the YouTube also. Thank you. In the further part we will continue in the next with the different assignments, okay। और डाउट क्लियर कुछ करना हो तो आप लोग बोल सकते हो, तो हम लोग डाउट क्लियरिंग का एक सेशन भी रख सकते हैं। थैंक यू।